हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। whywhat.com में खुशामदीद। आज हम HTML5 सीरीज़ का स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज़ HTML? HTML stands for hypertext markup language. Why HTML called markup language? HTML called markup language because it is a set of markup tags, and these tags are surrounded by angle brackets. It's less than angle bracket and it's greater than angle bracket. HTML को मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ मार्कअप टैग्स होते हैं और ये टैग्स एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, less than angle bracket, HTML greater than angle bracket. It's HTML opening tag and it's HTML closing tag. HTML closing tag को हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखते हैं। HTML कंटेंट को हम किस तरह और कहाँ लिखते हैं? HTML कंटेंट को हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में लिखते हैं। इसे लिखने का एक और भी तरीका है। इसे हम बगैर स्पेसिस के इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। इट्स HTML बेसिक स्ट्रक्चर। HTML5 में हमें डॉक टाइप HTML लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स HTML ओपनिंग टैग एंड इट्स HTML क्लोजिंग टैग। हम जितना भी काम करेंगे इन दो टैग्स के बीच में ही करेंगे। HTML ओपनिंग टैग के बाद सबसे पहले हम हेड ओपनिंग टैग लिखते हैं और हेड ओपनिंग और हेड क्लोजिंग टैग के बीच में हम टाइटल ओपनिंग और टाइटल क्लोजिंग टैग लिखते हैं।
टाइटल टैग के बीच में हमारी वेबसाइट का टाइटल आता है। हेड के नीचे हम सबसे पहले बॉडी टैग लिखते हैं, इट्स ओपनिंग टैग एंड इट्स क्लोजिंग टैग। हमारा जितना भी कंटेंट होता है, जितने भी टैग्स होते हैं, इसी बॉडी के बीच में आते हैं। और लास्ट में हम HTML को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा HTML का आगाज़ करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।